अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम आपको सैर कराएंगे बहुत ही खूबसूरत इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे से ग्लेशियर की, जो कि कोलंबिया आइसफील्ड के नाम से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ऊंचाई पे ग्लेशियर था। तो मैंने कहा हम इंजॉय करें तो क्यों ना मेरी यूट्यूब फैमिली भी साथ इंजॉय करे। तो जनाब चलें, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें बहुत ही खूबसूरत अल्लाह की शान को। ये है जी कोलंबिया का आइसफील्ड, यहाँ से खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा। हम जाएंगे अभी स्काई वॉक पे। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ जो जहाँ से बसें पिक एंड ड्रॉप करती हैं। ये देखिए जनाब, हम भी बस अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद हम लोग की भी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो बसें हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते, ये बसें हमें लेके जाएंगी। ये स्पेशल बसें हैं, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। ये देखिए जनाब, इसके बाद हम लोग जाएंगे फिर स्काई वॉक पे। वो देखिए आपको शायद एक बस नज़र आ रही है दूर से आती हुई। ये जो बसें ये पिक एंड ड्रॉप करती हैं। ये देखिए जनाब, खूबसूरत खूबसूरत सा नज़ारा। वो देखिए सारे जो पहाड़ हैं, इतनी बर्फ है उन पे, और हवा भी खूब चल रही है। हो सकता है मेरी आवाज़ भी थोड़ी ब्रेक हो रही हो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मैं स्काई वॉक पर ग्लेशियर पर जा रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लेके जाऊँ। तो ये देखिए आप भी खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा करें ज़रा। सब लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग की जो है टाइम वो है 4:30 की। हम लोगों ने टिकट्स ऑनलाइन ले ली थी, वरना जिन लोगों ने टिकट्स नहीं लेनी होती वो लोग यहाँ से टिकट्स ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले बहुत रश था, लेकिन इसमें कोई भी रश नहीं है यहाँ पे। ये देखिए तो ये जनाब कोलंबिया आइसफील्ड का जो हमारा सफ़र है, जो कि हमें ग्लेशियर की तरफ लेके जा रहा है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत सफ़र और अल्लाह की शान है माशाल्लाह। मैं तो वहाँ बस यही सोच रही थी कि सुभान है तेरी कुदरत, तूने कितनी हसीन दुनिया बनाई है खुदा पाक। बस अल्लाह पाक हम सब के ऊपर करम करे। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और मज़े की बात है, कहीं सर्दी और कहीं बहुत ही गर्मी, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी। तो शुक्र है हम लोग कपड़े अपने एक्स्ट्रा लेके आए हुए थे, जैकेट्स, और मतलब वार्म थे हम अच्छे, क्योंकि उन्होंने जगह जगह मेंशन भी किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ठंड होगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे भी है। और मज़े की बात, जो हमारे साथ यहाँ पे टूर गाइड था वो भी बहुत अच्छा था। वो तो साथ साथ बस तो चला ही रहा था, और वो मज़े मज़े के जोक भी सुना रहा था लोगों को। No, it's okay. Okay, this one's for the men only, because I know women know the answer to it. Okay, gentlemen, why is it the men's washroom is always on the left-hand side? Because their wives what? Nope, you're wrong. It's because women are always right. There you go. There you go. That's good. My wife reminds me of that at least once a week. Alpine region of the Rocky Mountains. And we are at an altitude of approximately 2,200 meters above sea level. And so we have a very short growing season up here. And our trees, for example, the ridges are off the side of the mountain. So golden eagles are not fun. Okay, you guys, we have landed. We have landed.
जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि जनाब मुझे तो यही लग रहा था कि हमें यही बसें लेके जाएंगी, लेकिन वहाँ तो और बहुत स्पेशल बड़े बड़े व्हील वाली बसेस खड़ी थी, जो कि बाद में हमें पता लगा कि ये जो बसेस हैं ये स्पेशल वो बसें हैं जो कि ग्लेशियर पे लेके जाती हैं, क्योंकि ग्लेशियर पे आम गाड़ी, आम कोई बस नहीं जा सकती। स्पेशल व्हील वाले जो बड़ी हैवी ट्रक होते हैं सिर्फ वो ही लेके जा सकते हैं। तो फिर हम उसमें बैठे, वो हमें आगे के लिए And the Athabasca Glacier is like a river that flows in that lake. Does that kind of make sense? All right, perfect. So, it is always moving, very, very slowly. It always goes downhill with gravity, and that's what has actually formed this valley here. If you can imagine, about 20,000 or more years ago, there was a big mountain right in front of us. It would have come. It's like basically just a big truck with four-wheel drive, and they can make it down here. But other than that, it's just these vehicles and our greater vehicles. You might have saw the cat vehicles up top there. Yeah, exactly. So other than that, it's just us. Well, we'll get to it. Don't worry. Yeah, they do all the time. You'll probably see quite a bit of people hiking on the glacier today. But look at that, ladies and gentlemen. Is actually a bunch of ice as well. So technically, we're driving on the glacier. If you look on your left side, this hill right next to us, at the top of it, some of the rock is kind of sheared away. And you can see some of that ice gleaming at the top there. Also on parts of the road as well. So this is called the ice core moraine. So basically how this works in quick summary is it's a hard, crusty, rocky outer surface with pure ice at its core. Kind of like my ex-girlfriend. So we go through here basically just to clean off the tires, because we don't want to bring all the rock and sediment onto the glacier road, because as we know, like darker things absorb more heat than lighter things, right? That's called the albedo effect. So if we were to bring all this dirt and rock out here onto the glacier, then it's all going to start looking like grandpa's tidy whities, all streaky. We don't really want that to happen, because then it's going to melt very fast. So we like to keep it nice and clean, keep it natural, and that way it doesn't melt too quickly. But you might notice a lot of other dark spots out here on the forest fire ash get brought down onto the ice. They absorb the heat and then they melt very quickly. As you can see, they make these nice big holes. So that is how crayoconite gets formed. And you can see all this glacier water running down on either side. Nice and beautiful. We like to keep it on the sides here. Now this glacier water is drinkable. If you guys want to get out there when you're walking around, there's lots of streams running everywhere, like on the sides of the turnaround point. And there's like a nice big river, waterfall type. But in low doses, you don't want to chug like a whole bottle, because it is natural glacier water and it is safe to drink. But by the time it gets down here, it might have picked up a couple of pollutants in its path. So it is safe to drink a little bit, but I just don't chug like a full bottle right away, because you never know, right? There's lots of diseases. बहुत ठंडी है। Yeah, it's just the reception would have probably made it look a lot better. Alright. Don't blow away. Wow. You'll get on another box, and they'll drive you to the skywalk, and then once you get there, you have as much time as you want, and the shuttle just keep lifting you up all day. So when you're done at the skywalk, you just hop on a bus and take it back. Yeah, no problem. वाह, ये जो पानी है इसको हम पी भी सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन पे किसी ने लिख दी दो दिलों की कहानी।
बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह के सपुर्द, अल्लाह हाफ़िज़।